Yes, Agrishi, first of all, introduce yourself before entering into the snap of soil engineering, as you have interview in HPCL dated 13th Jan 2023. So please Yes, go sir. ahead. Sir, do I have to give full introduction? No, no, no. Just in 20 seconds. Okay. Sir, I am Agrishi Goel. Uh, I have completed my civil engineering degree from University Institute of Technology, Bhopal in 2021. Uh, and sir, I have cleared the written examination for HPCL and I am here for soil mechanics snap interview. Okay. So can you tell me how will you decide by seeing the soil what type of foundation is suitable for that? Yes, sir. Sir, as I have studied various types of soils, and sir, with the help of that, by seeing the soil, I can decide which type of foundation. Sir, for example, in black cotton soil, we can provide raft foundation or the deep pile foundations, under reamed piles. And sir, in the Agrishi, the question is that how you come to know? By visual examination. By visual examination, can you check the soil is this black cotton? yes, sir, definitely. Sir, black cotton soil can be seen and determined by its color as well. Sir, also it has very uh, uh, swollen texture. Moisture content is high, and sir, uh, it has its own smell. Black cotton soil has. So we can also find out the sandy soil by its texture. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So what you said, the under reamed pile, right? Yes, sir. Under reamed pile. So under reamed piles are kind of precast piles or board cast in situ pile. Sir, they are board cast in situ piles. Okay. What is grip length in pile? Grip length. Sir, it is the length of the pile which stays underground and which makes grip and bond with the adhering and the adjacent soil, which helps the pile to make bond and serve the purpose for which it has been driven. Now see, suppose Agrishi, this is the pile that I draw here as per your statement. So you Yes, mean sir. to say that the portion of the pile which is below this ground surface will fall under this grip length criteria, right? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. This overall we have grip length. Yes, sir. Then what is the difference between this depth of pile and grip length? Then both are same. What do you think? This is what? This is nothing but depth of pile, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. Grip length. Agrishi, how will you decide the pile should be of this much depth? On Sir, what basis? sir, depth of the soil is defined mainly by the type of soil and the load which it has to carry. Okay, so what do you mean by type of soil? Sir, type of soil, sir, it depends upon the structure of the soil, the moisture holding capacity of the soil, and sir, the granular structure mainly. Sir, the optimum moisture content, the dry density of the soil. Oh. Sorry, sir. It's Yeah, sure. Go ahead. okay, sir. It's all right. Okay. So Agrishi, question is again same. You are not understanding what I asked you. मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, डेप्थ ऑफ पाइल डिसाइड कैसे करोगे? आपने बोला टाइप ऑफ सॉइल. अब टाइप ऑफ सॉइल समझने के लिए आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे. खाली आप विजुअल एग्जामिनेशन देख के नहीं बता सकते कि आपको पाइल की डेप्थ कितनी रखनी है, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आपको डीप फाउंडेशन के साथ जाना है. यस सर. आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? यस सर, जो मैंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बताई वो डेफिनेटली टेस्ट करके ही हमें पता चलेंगी, जिसके बेसिस पे हम डेप्थ ऑफ पाइल या फिर हमें जिस भी टाइप का फाउंडेशन देना है वो डिसाइड करेंगे. ओके. Have you heard this word shear strength of soil? Yes sir, shear strength of soil. So what it mean?
Sir, numerically, shear strength of soil can be formulated as tau is equals to tau is equal to C plus sigma n bar tan phi, where C is the cohesion of the soil, sigma bar is the effective pressure, and phi is the angle of internal friction. Okay, what is C and phi? Sir, these are the soil parameters. C is cohesion and phi is internal angle of friction. Okay, these are the soil parameters. C and phi are denoting what type of properties of the soil, like engineering property, index properties. Sir, engineering properties of the soil. Can you name any one engineering property? Sir, OMC, dry density. Dry density. Okay, fine. So from where you are getting the value of C and phi? सर सी एंड फाई सर हमें वेरियस लैब टेस्ट भी होते हैं और फील्ड टेस्ट भी होते हैं, लाइक ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ब्लॉक शियर टेस्ट, और सर हम लोग मोहर सर्कल से भी निकाल सकते हैं. ओके, तो ये जो ट्राइएक्सियल हो गया और ये जो आपको ब्लॉक शियर टेस्ट हो गया और जो आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, ये लैब में किए जाने वाले टेस्ट है या फील्ड में किए जाने वाले टेस्ट है? सर जो ट्राइएक्सियल और अनकन्फाइंड है ये हम लैब में करेंगे, और जो ब्लॉक शेयर टेस्ट है वो फील्ड में कर सकते हैं. सर एक और फील्ड टेस्ट है जिसका नाम मुझे अभी रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है. ओके, ये ब्लॉक शियर टेस्ट कौन सा टेस्ट है अग्रिशी? सर ब्लॉक शेयर टेस्ट से हम सी और फाई निकालते हैं. सर इसमें पहले से प्री डिफाइंड फेलियर प्लेन होता है, तो सर जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है, क्योंकि इसमें पहले से ये भी लैब में ही किया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट शियर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं ना. ओके, यस सर. अच्छा, ये सिग्मा बार क्या है? यू सेड दिस सिग्मा बार. यस सर, सिग्मा बार इज द सर इफेक्टिव प्रेशर. इफेक्टिव. ओके, व्हाट इट मीन इफेक्टिव प्रेशर? सर इफेक्टिव मींस सर टोटल में से जब हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमें एक इफेक्टिव वैल्यू मिलेगी सर, वो इफेक्टिव प्रेशर है ये. चलो, ये तो मैथमेटिकली हो गया. आप इसको समझाओ. आप अगर किसी को आपको समझाना है तो कैसे आप बताओगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? सर इफेक्टिव स्ट्रेस वो है कि अगर किसी लेवल पे किसी एक सैंपल के ऊपर कितना इफेक्टिव वेट लग रहा है. इफेक्टिव आई मीन टू से मतलब नेट प्रेशर जो भी लग रहा है डिडक्शंस करने के बाद में. ओके, एंड व्हिच वन डिडक्शंस वी आर डूइंग देयर? सर हम तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर का डिडक्शन कर रहे हैं. पोर वाटर प्रेशर. व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर? सर पोर वाटर प्रेशर सर जो सॉइल के पार्टिकल्स के अराउंड जो पानी होता है सर वो प्रेशर लगाता है, उसको हम पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर किसके ऊपर लगाएगा? सर आई एम नॉट कंफर्म येट. इफ यू अलाउ मी टू गेस, सर सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर. सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर. ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे अग्रिशी. यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस क्विक सैंड कंडीशन. यस सर. सो ये कंडीशन क्या होती है? सर क्विक सैंड कंडीशन इज अ टाइप ऑफ कंडीशन सर जिसमें पानी के साथ साथ सैंड के सॉइल के पार्टिकल्स भी ग्राउंड पे आने लग जाते हैं. सर ये कंडीशन तब अराइज होती है जब सीपेज प्रेशर सबमर्ज्ड वेट के बराबर होने लग जाता है, और सर जब सॉइल इज कोहेजन लेस. ओके, जब सीपेज प्रेशर सबमर्ज्ड वेट के बराबर हो जाता है. सबमर्ज्ड वेट. सबमर्ज्ड वेट का यूनिट क्या होगा अग्रिशी? सर सबमर्ज्ड वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब.
ठीक है, submerged weight. So Newton per cubic meter, right? This is Yes, kind sir. of the unit weight, right? Newton Yes, या sir. kilonewton, whatever you want to call. Yes, And sir. seepage pressure unit? सर इसका भी सेम ही होगा. Pressure है अग्रिशी. This is kind of your kilonewton per meter square. Sir, kilonewton per meter square. Yes, sir. Kilonewton per meter square. Then IZ how? का. Then how can you equate the pressure with this unit weight? Are both same or unit are same? No, units are definitely not the same. Sir, इसमें एक if I have to guess, एक exit gradient का role play होता है. तो जिसके यूनिट में एक लेंथ का डायमेंशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये नलीफाई हो जाएंगे. ग्रेडियंट का तो कोई भी यूनिट नहीं होता ऋषि. ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप, डेल्टा ढलान. L by L. There is no unit of this gradient. Whatever subject you are just studying, you will not find anyone this unit having unit. I having some unit. Might be your exit or critical or whatever Okay, gradient yes, you sir. have. You. Okay, so let me give you feedback, Agrishi. Okay, So sir. what I ask you, black cotton soil. Okay, you said we can by doing this visual examination, just like seeing the colors and even you can see the organic matter present, because the organic soil that we have having some blackish color, you can easily visualize by seeing that one. Okay, so this soil is also very compressible in nature. Yes, sir. Okay, if somewhat how you come to know this is the black cotton soil and you are just going with the under-rimmed pile. Okay, that was okay. Under-rimmed piles are kind of the board cast in situ pile. The question was that what is the grip length? Now see, we have decided, Agrishi, we have to go with the D foundation. D foundation means what? It means when we are not getting the hard strata at the reasonable depth. Yes, sir. Okay, so what we did, we just go with the greater depth, and whenever we are finding a suppose hard stratum here, we found this hard stratum here at this level. Just hold on. This is the level of the hard stratum, and Okay. we just insert the pile below the hard stratum. This is nothing but this is your grip length or socket length. Okay. Okay. Even we have this design. What this is kind of the cantilever, na? So we Yes, are taking this end as a pin. This is your fixed. So one end fixed, other end pin. We are just considering it in design. Yes, sir. So this is a socket length. मतलब hard surface. ये जो मेरा hard set है, इसके Yes, sir. नीचे हमने जो भी लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड किया, that is your grip length है, socket length. Okay, okay. और ये जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो हाइट होती है पाइल की, अगर आपने कभी देखा होगा कि फिर उस पाइल को तोड़ा जाता है, उसमें से स्टील बाहर निकला होता है, दैट इज योर कट ऑफ लेंथ. ओके सर. कट ऑफ लेंथ या चिपिंग लेंथ भी इसको बोलते हैं. ओके. ओके, एंड बोथ आर मेंशन इन द कोड्स. ओके सर. एंड आई थिंक डेप्थ ऑफ पाइल. सो किस बेसिस पे आप देखो यहाँ पे डिसाइड करोगे व्हाट शुड बी द डेप्थ? सिंपल आंसर यू हैव टू से, sir, we have to check what is this SBC value given to us. This is given by the geotechnical engineer. Geotechnical engineer will provide you data. So from the ground surface 1 meter below, you have this type of soil. Let it be sandy soil. Above this 1.5 meter, let it be 0.5 meter interval. 1.5 meter we have the sand plus silt. So we have different soil capacities in kilonewton per meter square or in ton per meter square, whatever may be the units. Yes, sir. And finally, what is the load and what the soil can take? Is it okay? What is the final load that is coming on the pile that is known to us? And what is the soil that can it bear safely? That should be known to us. On the basis of that, we can decide this should be the depth of the foundation or pile. Okay, the simple answer you can say, sir, we can just conduct with the SPT test. You must heard about this one, SPT. Yes, sir. Standard penetration test or borehole test data we have. Okay. Okay, borehole test data also there. So shear strength of soil. Okay, just have a look. This one is the engineering property of the soil, shear strength of the soil. Yes, sir. And C and phi are not any type of the properties of the soil. They are kind of the shear strength parameters. Okay. Okay, you said this is engineering property. No, they are not the engineering or even the index property. Two type of property we have. Yes, sir. Okay, and in on field, what test you can go to calculate C and phi? This is your SPT test, standard penetration test. Okay. Just like this plywood stand and there is a 65 kg hammer, it has been folded on a split sampler from particular height. First 150 mm corresponding blue is ignored. Yes, sir. Yes. Okay.
See, I think just little modification you have to do. Improvement is there. थोड़ा आपको Yes, sir. इम्प्रूवमेंट करना है ऋषि. फाइन. किन कुछ चीजों के आप आंसर नहीं कर पाए. Yes, sir. जैसे आपसे इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा ना, हम्म. तो सबसे पहले तो आप उसको बिल्कुल ऐसे वे में समझाओ कि जो सामने वाला इंटरव्यूअर है इजीली वन स्टेटमेंट में उसका पर्पस क्लियर हो जाए. Okay, sir. पैनल में जो पर्सन होगा, सपोज इज फ्रॉम द नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मान लो वो किसी और ही फील्ड में एक्सपर्ट है, मान लो जैसे आपका वो नॉन टेक वाला पार्ट है, एचआर वाला पार्ट भी चलेगा. Yes, तो sir. कुछ ऐसे आपका बिल्कुल स्टेटमेंट होना चाहिए, आंसर होना चाहिए जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, सिंप्लीफाइड वे में आंसर होना चाहिए. Yes, sir. थोड़ा कोशिश करो. रेस्ट ऑफ थिंग इज ओके, बट यू नीड अ इम्प्रूवमेंट.